begin with this first experiment, the solution and suspension on the basis of transparency filtration. आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगी सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन पे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो हमें होंगे वो बीकर, 2 बीकर, सॉल्ट, chalk powder, spatula and water. Now we have start to this experiment. We have filled 2 water in this 2 beaker. And dissolve some salt in this beaker. And the second beaker, the chalk powder dissolved in this beaker. अब आप ये देख सकते हैं, we can see that easily the solution particles, the salt particles may dissolve properly and the chalk powder dissolve may not properly. Now we have easily understand the solution, what is solution and what is suspension. The solution is the homogeneous mixture of 2 or more substance which may not separated. सॉल्यूशन एक ऐसे हम मिक्सचर को कहते हैं जो कि हमारे पास डिसॉल्व हम जिसको कर सकते हैं और हम इसको अलग नहीं कर सकते। और सस्पेंशन हमारे पास इज द मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड विद सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच may नॉट डिसॉल्व इन द लिक्विड। सस्पेंशन हम ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें हमारे पास डिसॉल्व हम कर सकते हैं लेकिन इसको हम अलग नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं। नाउ anyone tell me why it is written the bottle syrup shake before well before use? Yes, because the components of the medicine may settle down after some time, and so a shaking is required to mix the blend properly. Very good. वो डिसॉल्व नहीं हो सकते प्रॉपरली, तो हम सस्पेंशन में ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ चुके हैं और ये डिसॉल्व प्रॉपरली नहीं हुए हैं, जबकि जो सॉल्यूशन है वो उसके पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स बिल्कुल प्रॉपरली डिसॉल्व हो चुके हैं। आज हमारा एक्सपेरिमेंट छोटा सा जो कि कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर